नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो आज की हमारी पहली हेडलाइन है, फर्स्ट टाइम डेली वेजर सुसाइड क्रॉस क्वार्टर ऑफ नेशनल टोटल। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो रिसेंटली एनसीआरबी डाटा शोज दैट daily wage earners remains the largest profession-wise group among the suicide victims in 2021। बाकी इस रिपोर्ट को हम बहुत ही डेप्थ में कवर करने वाले हैं अपनी वेबसाइट पे और वो शाम तक आपको मिल जाएगी। ठीक, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज इंडियंस गेट नियरली ट्वाइस एज मेनी यूएस स्टूडेंट वीजास एज चाइनीज दिस ईयर। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है जानना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन F1 एंड M1 वीजा प्रोग्राम के बारे में। तो अगर हम F1 की बात करें तो क्या है ये? इट इज ए नॉन इमिग्रेंट वीजा फॉर दोज हु विश टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज, हाई स्कूल, प्राइवेट एलिमेंट्री स्कूल, सेमिनरी, कंजर्वेटरी लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम और अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन द यूएस। अगर हम M1 की बात करें तो इट इज अनदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वीजा which is meant for foreign nationals who wish to study at vocational or other recognized non-academic institutions other than language training programs in the US। आज की हमारी अगली इंपॉर्टेंट हेडलाइन है यूनाइटेड नेशंस हाई सीज ट्रीटी। ये अवेलेबल है पेज नंबर 9 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है यूएन हाई सीज ट्रीटी के बारे में और व्हाई हैव कंट्रीज फेल्ड टू एग्री ऑन इट। So it is a treaty to deal with biodiversity beyond national jurisdiction and it has been under discussion for several years. The proposed treaty concerns the ocean existing beyond exclusive economic zones. The treaty was to be negotiated under United Nations Convention on Laws of the Sea, also known as UN Clause, which governs the right of countries regarding marine resources. Resistance क्यों है इसके against? There has been talk of resistance from the countries that engage in deep sea mining of minerals or heavily invested in fishing. Our next important headline is Geo standalone 5G architecture and how will it work। ये अवेलेबल है पेज नंबर 9 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इस आर्टिकल में हमें जानना है व्हाट आर द टू डिफरेंट मोड्स ऑफ 5G नेटवर्क्स, what are the key differentiators between standalone and non-standalone 5G networks, how is the 5G smartphone ecosystem in India shaped, and what are the broad benefits of 5G for consumers। तो अगर हम बात करें तो 5G networks are deployed mainly on two modes। कौन से हैं वो? standalone and non-standalone। In standalone mode 5G networks operate with dedicated equipment and runs parallel to the existing 4G network, while in non-standalone mode 5G network is supported by the 4G core infrastructure. Given that non-standalone networks are built on existing infrastructure, the initial cost and the time taken to roll out services through this track is significantly less than standalone networks। आज की हमारी अगली इंपॉर्टेंट हेडलाइन है डेस्टिनेशन मोड एंड बियॉन्ड। ये अवेलेबल है पेज नंबर 9 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानना, आर्टेमिस 1 के बारे में। इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी वेबसाइट पे कवर किया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं और उसके आगे लिख दीजिएगा नेक्स्ट IAS, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज व्हाई कैलिफोर्नियाज डिसीजन टू फेस आउट पेट्रोलियम पावर्ड व्हीकल मैटर्स। ये अवेलेबल है पेज नंबर 9 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। ये पेपर 3 से भी रिलेटेड है एनवायरमेंट सेक्शन से। ठीक है, इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो हाउ विल दिस पॉलिसी वर्क एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट एंड आर देयर चैलेंजेस एंड व्हाट अबाउट इंडिया स्टैंड। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि कैलिफोर्निया हैज अप्रूव्ड अ बैन ऑन सेल ऑफ न्यू पेट्रोलियम पावर्ड व्हीकल्स बाय 2035। It is a landmark policy intervention that could have an impact throughout most other American states and in countries outside of the US। अगर हम इंडिया के टारगेट की बात करें तो क्या है इंडिया का टारगेट? इंडिया हैज अ टारगेट ऑफ मीटिंग एट लीस्ट 65% ऑफ ऑल न्यू व्हीकल सेल्स टू बी इलेक्ट्रिक बाय 2030। ठीक, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज Inequality Hurts Us All। अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे और ये रिलेटेड है पेपर 1 सोसाइटी से। इस आर्टिकल में हमें जानना है हाउ डिड द कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट इन इंडिया, फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड व्हाट नीड्स टू बी डन इन दिस कंटेक्स्ट। तो इश्यूज कुछ हाईलाइट किए गए हैं इसमें, जैसे कि एजुकेशन इज नॉट अ नेचुरली जॉयफुल प्रोसेस फॉर मेनी दलित स्टूडेंट्स। Several new reports detail that their harassment and humiliation in schools all over the India. They are often made to sit away from other children or queue up separately for midday meals. At times, they are beaten up by upper caste teachers and students. In several places, most common water taps are not for them. In many places in the country,
Even today, caste determines the person's occupation. Caste discrimination makes our democracy fraught, as Ambedkar stated that at the dawn of the Indian Republic in 1948, political democracy has been achieved by the freedom struggle and takeover from the British, but social democracy is far away. ठीक. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज रिटर्न ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू रिव्यू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. What kind of implications does the unfolding global nuclear discourse present for India, India's nuclear and missile program, and what lies ahead? तो इस आर्टिकल को हम बहुत ही शानदार तरीके से आज कवर करने वाले हैं अपनी वेबसाइट पे, राइट? तो शाम तक ये आपको मिल जाएगा. Our next and last important headline is looking for duty-free access for ODOP goods in trade pacts. ये अवेलेबल है पेज नंबर 13 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से. इस आर्टिकल में हमें जानना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स को. ठीक, तो ये क्या है? इट इज सीन एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स रियलाइजिंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ डिस्ट्रिक्ट and fueling economic growth and generating employment and rural entrepreneurship, taking us to the goal of Atmanirbhar Bharat. It is aimed at achieving the vision of Honorable Prime Minister to foster balanced regional development across all districts of the country. Right? तो अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि get out of your comfort zone and start working for your dreams. Thank you so much for listening.